something which has just come fresh off the coals, if I may say that. This is what is being said. In a time of high unemployment, rising prices, corruption and oppression, Rahul Gandhi is the only hope for 1.35 billion Indians dedicated to bringing justice to every corner of our country, and is the only leader who can end this regime of fascism and dictatorship. Hashtag only hope Rahul Gandhi. This is by Mr. P. Chidambaram. Your thoughts, ma'am? I think the sniggers in the audience speak louder than any statement that I can give. But I also believe that the destiny of a nation cannot be decided by a man who is scared of being defeated in a meeting. So a leader is one who does not leave his fleet behind. The gentleman hashtagged is somebody that I had the privilege of contesting against in 2019. Victory and loss are a part of electoral politics. But what defines a leader is that if they have grit enough, courage enough to stand with their own beliefs amongst their own people. And I don't think somebody who escapes and is feared of being conquered electorally is somebody who can lead a nation to better prospects. So I understand the compulsions of Mr. Chidambaram, but I also recognize that the voter at large respects the reality of a rising Bharat. लेकिन वो ये कह रहे हैं कि वो शक्ति को हराएंगे। देखिए, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को एक क्लैरिफाइड पोजीशन में अब रखा है। कहा है कि मैं उस शक्ति का उल्लेख नहीं कर रहा जिसका धर्म से कोई संबंध हो, लेकिन आज के एक एक्सपेंसिव कम्युनिकेशन और मीडिया के दौर में उनकी शब्दावली छुपी नहीं है किसी से देश में। ये पहली बार नहीं है कि उन्होंने मेरे धर्म हिंदुइज्म के खिलाफ कोई वक्तव्य दिया हो, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर वाकई में वो सेक्युलर हैं तो धर्म की आड़ में ना लड़ें, मुद्दों के आधार पर लड़ें। स्पष्ट रूप से पूरे राष्ट्र ने उनको सुना जब उन्होंने कहा कि शक्ति जिसका हिंदू धर्म में उल्लेख है वो उससे लड़ना चाहते हैं। तो मैं तो एक हिंदू के नाते इतना ही कहना चाहती हूँ कि आज तक जिसने मेरे धर्म को, मेरे आराध्य को ललकारा है, उसका क्या हश्र हुआ है। कोई रामायण, गीता, महाभारत पढ़ ले, उसको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन अगर कोई हमसे ये कहे कि हम उनके शब्दों को समझ नहीं पाए और शायद उनका उल्लेख जो था वो राजनीति के कॉन्टेक्स्ट में था, धर्म के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, तो मैं जानना चाहती हूँ किस शक्ति से लड़ना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस देश में 4 शक्तियों का विशेष उल्लेख किया। एक नारी शक्ति, दूसरा युवा शक्ति, तीसरा कृषि की शक्ति और चौथा वो गरीब जो अब उत्थान की ओर बढ़ रहा है। तो इन चारों में से किस शक्ति से राहुल गांधी लड़ना चाहते हैं? ये वो शक्ति की बात कर रहे हैं जो ईडी को कंट्रोल करती है, ईवीएम को कंट्रोल करती है। देखिए, पुरानी एक हिंदी में कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका। अब जिसकी दाढ़ी ही तिनकों से भरी हो उसको थानेदार में भी चोर नजर आता है, लेकिन जिसने चौकीदार शब्द के इस्तेमाल के लिए सुप्रीम कोर्ट में माफ़ी मांग ली हो उसको ये फॉल्स ब्रवाडो शोभा नहीं देता। वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जिक्र कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी उगाही पार्टी है। सीबीआई, अमित शाह जी ने एक स्पष्ट रूप से रुबिका जी कहा है सार्वजनिक मंच पर कि 303 सांसदों की पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से ट्रांसपेरेंटली बैंकिंग सिस्टम के माध्यम से 6000 करोड़ का बॉन्ड मिला, लेकिन जिनकी ताकत 200 की भी नहीं है स्पष्ट रूप से, उनको 14,000 करोड़ रुपया मिला। तो मेरा पलटवार ये है कि ऐसी कौन सी उगाही कत्ती राहुल गांधी छोड़ गए हैं कि उनके पास 14,000 करोड़ रुपया है। ये आप लोग रिएक्ट करिए, ऐसा नहीं है कि मत करिए। वो लोग चुनाव के दिन रिएक्ट करेंगे बटन कमल का दबा के, चिंता ना करें। ये एक और आरोप सिर्फ भारत में नहीं है, दुनिया भर में भी है कि भारत इस करंट गवर्नमेंट में या पिछले 10 साल में एक इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी की तरफ बढ़ रहा है। अगर हम एक स्टेटस को स्मैश करने की बात कर रहे हैं
तो यहाँ पर हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दिस कि हम धीरे धीरे एक इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी बन रहे हैं, यानी कि जनमत तो है लेकिन सब कुछ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कंट्रोल के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। जिस देश ने अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंका, जिस देश में आज 940 मिलियन वोटर आइडेंटिफिकेशन और ऑथेंटिक आइडेंटिफिकेशन के साथ अपना वोट देंगे, उस इलेक्टोरेट का इतना बड़ा अपमान मैंने आज तक नहीं सुना। टू से दैट यू आर वाइजर देन द वोटर just because you're an analyst overseas is one of the biggest hypocritical positions taken by anybody who tries to analyze our democracy, especially from countries which don't have such a large voting populace. What they cannot fathom is why the average Indian today is buoyant about their future prospects. What they cannot possibly come to terms with is why India and Indians are so blatant about their ambitions and their pursuits of excellence. And possibly that is why this is the same voice which when COVID came said, how will India survive with 6 lakh plus villages? How will Indians eat? How will Indians receive pharmacological support? How will Indians get a vaccine? I think the mettle of a country and a leadership is best tested when your back is to the wall. India not only made vaccines, delivered it to 1.4 billion citizens, it also gave vaccines and pharmaceuticals to 160 countries. India is the only nation in the world today that at the doorstep of 800 million citizens consistently for the past 2.5 years is delivering free ration every month. No country in the world today has an expansive health coverage system like Ayushman Bharat, where 100 million people receive 5 lakh rupees worth of medical support across 28,000 hospitals, with not a single human being who's covered missing a treatment in any hospital in the country. So I think that those people who sit in these analogies and analysis possibly cannot come to terms with the fact that India has a functional government, which is tested every time we go to polls, and that you have a leadership that responds to the people's needs and people who appreciate that leader. I also believe, Anand, when we go to vote, for too long and for too many years in our country, we have seen people vote on the basis of an emotion. Narendra Modi and before him Atal Bihari Vajpayee, I'm very proud, were two leaders who said, judge us by our development performance. What you see on the opposite are people who are pliant and depending on negative rhetoric. But Modi is the only leader right now who has given you a national ambition. Remember, after the independence freedom movement, we've never had a national ambition and a clarion call like 2047. So while Modi says for 2047, we need to create more opportunities for education, for enterprise, for skill, for manufacturing, what does Rahul Gandhi offer you? Division on the basis of religion, division on the basis of class, division on the basis of caste. While Modi says, let's talk about Atmanirbhar Bharat. What is Atmanirbhar Bharat? It is economic sovereignty of this country. What does Rahul Gandhi tell you? Atmanirbhar mat bano. While Modi says, let's pull 25 crore Indians out of poverty, and today the World Poverty Clock, forget anybody else, says that less than 3% people in India now live under the line of poverty. What does Rahul Gandhi tell you? He glorifies poverty. He glorifies a martyrdom at the altar of lost opportunities. So why should any informed voter then vote for Rahul Gandhi or an alliance which is barely together? लेकिन वो ये कहते हैं कि वोटर तो हमें वोट करता है, लेकिन राजा की जान ईवीएम में है। देखिए, जो राजघराने में पैदा हुआ हो, जिसने उपहास उड़ाया हो एक ऐसे व्यक्ति का जो एक ज़माने में चाय वाला हुआ करता था, ये तो राजनीति की कैसी माया है कि अब उसको वो चाय वाला राजा दिखता है। अब जितना मैंने राहुल गांधी को सार्वजनिक रूप से सुना है, कई चीज़ों में उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी है। मैं एक क्लैरिफिकेशन मांगती हूँ। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बार बार
घोषणा की सार्वजनिक की, आइए टेस्ट कीजिए। क्या एक बार राहुल गांधी गए? बड़ा आसान है तोहमत लगाना, लेकिन आप किस पे तोहमत लगा रहे हैं? लोकतंत्र पर। आप लोगों की चॉइस पर तोहमत लगा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन पर तोहमत लगा रहे हैं, और आपको लगता है पूरा ब्रह्मांड, पूरी कायनात इस जद्दोजहद में लगी है कि मोदी को प्रधानमंत्री बना दो। जद्दोजहद ये वोटर की है, क्योंकि वोटर ने 10 वर्ष की अवधि में मोदी को हर वचन की पूर्ति करते हुए देखा है। मैं अपना ही अगर लोकसभा क्षेत्र ले लूं, जहां पर 50 साल गांधी खानदान का राज रहा, 15 साल राहुल गांधी सतत वहां पर सत्ता में बने रहे, रूबिका जी, वहां पर 1,09,000 परिवारों के घर तो पिछले 5 साल में बने हैं। 4 लाख परिवारों को पहली बार जीवन में टॉयलेट मिला है। जहां 50 साल उनका खानदान रहा, अगर आप एक घर में मात्र 4 लोग गिन ले, 16 लाख लोगों के पास 25 लाख की आबादी में तो टॉयलेट नहीं दे पाया था ये खानदान, और ये ईवीएम पे शक कर रहे हैं। स्मृति जी, आपने कहा कि मरते दम तक, ये आपका अगर बयान सही है, मैं वहाँ गांधी परिवार को अमेठी में जीतने नहीं दूंगी। और ऐसा लगता है कि मेरा प्रकोप ऐसा है इस वचन का कि रायबरेली से भी गायब हो गए हैं। पर आप ये भी मानेंगे? नहीं, पर लेकिन ये ऐसी भावना क्यों? ये गुस्से की है, ये बदले की है, ये द्वेष की है? ऐसा है, मैं ऐसी भावना इसलिए कह रही हूँ रूबिका जी, अगर आपने 4 लाख गरीब औरतों को अंधेरे तलाशते हुए देखे हों कि वो खुले में शौच कर सकें उस इलाके में जहाँ 50 साल इस खानदान ने राज किया हो, आपको भी उतना ही गुस्सा आएगा जितना कि मुझे। अगर आपने 3 लाख लोगों को घर में बिना स्वच्छ पानी के जीते देखा उस इलाके में जो प्रधानमंत्री चुन के देते थे, तो आपको भी कहीं ना कहीं ये मन में कोलाहल होता होगा जैसा मुझे होता है। अगर आपने 4 लाख लोगों को बिना छत के देखा हो, आप जानते हैं जहां 50 साल गांधी खानदान का राज रहा, राहुल गांधी 15 साल वहां पर अपनी सत्ता जमा कर बैठे थे, 10 साल उनकी माताजी यूपीए की अध्यक्ष थी, उनके मित्र अखिलेश जी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी। आपको पता है कि कलेक्टर के ऑफिस का शिलान्यास अमित शाह ने आकर किया। वहां पर पहला सीटी स्कैन का मशीन मोदी सरकार लाई, पहला डायलिसिस का सेंटर मोदी सरकार लाई, पहला ब्लड बैंक मोदी सरकार लाई, पहला पासपोर्ट का ऑफिस मोदी सरकार लेके आई। ये एक ब्लड बैंक नहीं बना पाए वहां। क्यों नहीं बना पाए? इच्छा नहीं थी, क्योंकि जब तक लोग इनके सामने गिड़गिड़ाते नहीं तब तक इनको वोट मिलता नहीं। आप कल्पना कर सकती हैं कि ये ऐसा खानदान है, इनकी राजनीति ऐसी है कि गरीब को इन मूलभूत सेवाओं से वंचित रखो। ताकत थी, साधन था, प्रोसेस में, पॉलिसी में इनका सहयोग था, चाहते तो कर सकते थे, जानबूझकर नहीं किया। लेकिन आप ये भी मानेंगी कि आपके वहाँ जाने तक उनको ही अमेठी चुनती थी, उनको ही रायबरेली ऑप्शन नहीं था, शायद ऑप्शन नहीं था टेनेसिटी का। और मैं बता दूं आनंद, ये कोई आसान लड़ाई नहीं है। मैं 2014 में जब पहली बार लड़ने गई थी, मुझे रहने को किसी ने जगह नहीं दी, मुझे सीमेंट के गोदाम के ऊपर एक कमरे में रहना पड़ा, इतना खौफ था उस खानदान का। मैं जब 2014 में पहली बार गई तब वहां पर 2 लोग खड़े होने के लिए राजी नहीं थे। प्रेम की भाषा नहीं बोली जाती थी, खौफ की भाषा थी अमेठी में। आप अगर कभी, मैंने कहा गांधी जी से, शरद यादव जी तो अब नहीं हैं, उनसे पूछे जिन्होंने अमेठी में कभी चुनाव लड़ा है, राजमोहन गांधी जी का आप इतिहास उठाकर देख लीजिए। लोगों को निर्वस्त्र किया गया है, गोलियां मारी गई हैं। अमेठी के विपक्षी कैंडिडेट पे आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, गोली चली है भाई साहब। तो ये आज किसी को लगता है इन हाइंडसाइट कि अरे स्मृति ईरानी ने कोई सास बहू किया होगा इसलिए वोट पड़ गया। वहाँ 1,20,000 घरों में तो पहली बार बिजली मोदी ने दी है। आप बिलीव करेंगे, जहाँ 50 साल उनका राज था वहाँ 60% घरों में कभी बिजली नहीं थी। तो ऐसे इलाके में पहली बार चुनाव लड़ना कोई साधारण चुनाव नहीं था वो। तो जब आपको कहा गया कि आप वहाँ चुनाव लड़िए, या अब आपको कहा गया है कि अब कहीं ना कहीं आपने अमेठी को अपना घर बना लिया, आपका गृह प्रवेश घर बनाया है, गृह प्रवेश हुआ है, उसकी आपको बधाइयाँ,
लेकिन उसमें भी आपको 5 साल लग गए। हाँ, तो वो क्या अटल जी की कविता है ना, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूँ मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। कहता हूँ तो अब तो जिसके पास नेता ऐसे हों, जिनकी कविताएं ऐसी हों, तो जोशीले होना उनके लिए संभव ही है। तो आपको ये खला नहीं, थोड़ा सा मैं पूछना चाहता हूँ कि मुझे ही क्यों भेजा गया अमेठी? बिल्कुल नहीं, मुझे तो ये अच्छा लगा कि उस खानदान को धूल चटाने के लिए पूरी पार्टी में मेरा ही नाम मिला था। अच्छा, लेकिन मुझे आप किसी चीज का मलाल नहीं आनंद जी। हाँ, आप कॉन्फिडेंट हैं कि वो नहीं आएंगे? आ भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और प्रियंका गांधी, मैं बड़ी विनम्रता से ये कह रही हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उनकी आजमाइश नहीं हुई है, भाई बहन दोनों की। और विनम्रता का भाव इसलिए रखती हूँ रूबिका जी, क्योंकि 2022 का विधानसभा का चुनाव हुआ, जहाँ पर दोनों के दोनों मुखातिब हुए थे अमेठी से, और तब गांधी परिवार के उस सदस्य के पास उत्तर प्रदेश में सीट लड़ाने का दायित्व था। और 5 विधानसभा की सीटें हैं अमेठी में, और जो 4 विधानसभा क्षेत्र में दोनों ने मिलकर पग धरे थे, वहाँ चारों विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस की जमानत जब्त हो चुकी है 22 में ही। 2019 में कांग्रेस पार्टी अकेली नहीं लड़ी थी, अखिलेश जी, मायावती जी संग उनके रहे थे, तीनों ने मिलके मेरे सामने चुनाव लड़ा था भाजपा के सामने। तब कांग्रेस के पास लगभग 4,30,000 वोट थे इस गठबंधन के पास। अगर आप 22 का चुनाव उठाकर देख लें तो कांग्रेस के पास अमेठी लोकसभा क्षेत्र में 22 में सिर्फ 1,20,000 लगभग वोट बच गए थे। मतलब 19 से लेकर 22 तक के बीच में 3 लाख वोट उनके पहले ही हम कम कर चुके थे। अब सोचे, जब 2 सालों में या 3 सालों की अवधि में 3 लाख वोट कम हो गया, 22 से लेकर 24 तक अब क्या हश्र हो रहा होगा। इसीलिए तो जब यात्रा लेकर आए थे, जनता तो छोड़िए, उनका कार्यकर्ता भी नहीं था वहाँ। कहते हैं कि कंफ्यूजन था, Confusion था। क्योंकि वो अलायंस जमा नहीं था उस वक्त ऐसा है कि आनंद सपा जी, आए कि नहीं आए। मैं आभारी हूँ कि आपने ये कहा। तो नेता भी कंफ्यूज्ड है, अलायंस भी कंफ्यूज्ड है, काडर भी कंफ्यूज्ड है। मर्सीफुली देश को कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो आप मानती हैं कि देश को कंफ्यूजन नहीं है? 370 प्लस बीजेपी 400 पार। मेरा मंतव्य और सब छोड़ दें, यहाँ पूछ लीजिए। आप पूछिए। नहीं, आप पूछ लीजिए, मैं तो फिर फेयर, ये मेरी ओर से प्रश्न नहीं होगा। यहाँ पर कौन मानता है राहुल गांधी इज द होप फॉर 1.3 बिलियन पीपल? एक तो 1.4 बिलियन भी नहीं लिखा है। चलिए शो ऑफ हैंड्स कर लेते हैं। हम नहीं एग्री विद मिस्टर पी चिदम्बरम? अब बताओ कौन राजा है, जनता की ईवीएम? नहीं, ऐसा नहीं। अगर आपको अगर कोई खौफ है तो खौफ ना रखे। बेखौफी से कोई ऐसा है जो पी चिदम्बरम साहब के ट्वीट से और राहुल गांधी। अरे मुझसे ज्यादा तो रूबिका जी पी चिदम्बरम का खौफ है, इसलिए कि वो वापस सत्ता में ना आए, ताकि जो लुटा था वो वापस लुटेरों के पथ पे ना चला जाए। मैं आपको कॉन्टेक्चुअलाइज आपकी अनुमति से एक चीज करना चाहती हूँ। जब हम कहते हैं द लॉस्ट डेकेड ऑफ अपॉर्चुनिटी, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2004 से लेकर 14 तक का लॉस हुआ है। जब जब कांग्रेस की अध्यक्षता में इस देश में, अगर आप विशेष रूप से उनकी परफॉर्मेंस देखें, आज हम मोदी जी की चर्चा करते हैं, जब अटल जी प्रधानमंत्री बने थे, उनका जो कार्यकाल था, अगर बैंकिंग की बात करें, ठीक, बैंकिंग का जब उनको इनहेरिट किया उन्होंने एनपीएस, वो लगभग 16% या 17% था। जब उन्होंने ऑफिस छोड़ा 2004 में, एनपीए लगभग 7% तक आया, तब तक वो ला चुके थे नीचे। कांग्रेस के राज में 2012 पे आप जाइए तो वापस एनपीए 12-13% तक बढ़ चुका था। जब अटल जी ने अपनी सरकार छोड़ी थी और यूपीए की सरकार आई थी, आपका एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो हो रहा था 9% पे, आपका सर्विस सेक्टर ग्रो हो रहा था 7% पे, आपका ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ था 8% पे। आपके जो एडवांसेस देती है पब्लिक सेक्टर बैंक्स, वो थे लगभग 6 लाख करोड़ रुपए पे। यूपीए का अगर आप आज भी नंबर उठाकर देख लें, यूपीए ने 2012 तक, 4 से लेकर 12 तक, आपको पता है कितना एडवांसेस दे दिया था पब्लिक सेक्टर बैंक से? 39 लाख करोड़, जिसमें से 3.8 लाख करोड़ व बैड एसेट्स एंड नेवर डिक्लेयर्ड। ये खामियाजा किसने भुगता? देश ने भुगता। तो इसीलिए कह रही हूँ, उनकी परंपरा है देश को लूटने की,
और जो 10 साल मोदी जी के रहे हैं वो सिर्फ पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस के लिए नहीं रहे हैं, पॉलिटिक्स ऑफ रेवोल्यूशन भी रहे हैं. This whole family has been tested on its mettle, on its political performance and inputs, and the best test I think for the country was when COVID came. Revelation की बात करें तो even this government is blamed for not revealing numbers. Statistics are not out. The actual numbers are not out. But statistics don't endear themselves to the opposition. That's a different issue altogether. But you would also agree that they may not like the statistics. They don't like the growth numbers. Why would they? They are fighting on a negative. No, the why allegation would is they say, that yes, the numbers are the growth numbers are dressed up. Yes, there is growth, but there some of like it is I said, dressed up. Anand, let's give me a small interjection. Okay, 30 crore mudra loans given to only women. 8 crore loans given to youngsters, first-time entrepreneurs, okay? Out of the 30 crore loans given to women, NPA is less than 2.5%, which means these loans got serviced, business got done, there was a profit, that's why the loans got serviced. So are those 30 crore women who got the loan, who did the enterprise, are they not employed? They are, right? 8 crore new entrepreneurs. Obviously, they serviced their loans. Obviously, they paid back. So were they not employed? 38 crores तो मैंने आपको यहाँ बैठ के गिना दिया है. Yeah, but you know, with respect to your ministries, banks are women lying. and child care development, and also the minority ministry. Two aspects let's talk about. Malnourishment, we still rank one of the highest in terms of malnourishment. Who's ranking us? Who's ranking us? If you're a number cruncher, there's a public data available on a tracker called Poshan Tracker. Yes. What does Poshan Tracker track? 75 million children below the age of 6. Correct. Right? How do they track? On WHO standards. Who does the third-party evaluation? The World Bank. Whether the testing methodology is correct or not. Evidence is available today for 75 million children. When did the Congress last compute it? There was no such evidence available before. The other aspect is of food security. If 80 crore people were not being given the food security, which is also being extended for the next 2 years, so basically what Rahul Gandhi wants, you'd still have a large number of people. What Rahul Gandhi wants is people should not get food. Is that your position? You'd still have a large number of people who would be struggling around the poverty line or would be going hungry. So let me contextualize it for you. Everything is not as rosy as it is painted. And I'll tell you why. 13.5 crore Indians came out of multi-dimensional poverty only because of Modi's health initiatives. What are those health initiatives? Primary being Ayushman Bharat Yojana. For every Indian, especially the poor, who got 1, 2 and the booster dose free, how much was it in the normal market? If you went to buy the vaccine, $600 per shot. So 1,800 rupees, let's say. If you don't take the booster shot, 1,200 rupees. In a family size of 4 people, how much would have that been for a poor family? Second, if you look only at the Ayushman Bharat numbers from October 2023, 5 crore 70 lakh hospital admissions worth 70,000 crore rupees done. Do you compute the cost of the burden on the GDP if this health support was not given to these people? For instance, when we talk about sanitation, we talk about 11 crore toilets built. Yes. I will take you back to this very channel. In the year 2010-12 के बीच में, this channel has carried a report about what? 6% negative impact on India's GDP because of lack of sanitation. So when Modi gives a sanitation facility, it has a positive impact on the growth numbers. When Modi gives ration free to poor, it not only helps them come out of multidimensional poverty, it sustains them out of multidimensional poverty. It also fires up rural consumption, hence keeping industry and manufacturing alive. स्मृति जी, ये जो कॉन्फिडेंस आपका है, आप यकीन के साथ कह सकती हैं कि नंबर्स में भी झलकेगा, और अगर हाँ तो उत्तर प्रदेश में आप 80 में से कितनी सीटें लाएंगी इस बार? देखिए, मैं ना योगेंद्र यादव जैसी कोई सेफोलॉजिस्ट हूँ, ना मैं राहुल गांधी जैसी कोई बुद्धिजीवी हूँ. मैं आपको इतना ही अश्योर कर सकती हूँ कि जो मोदी ने कहा है वो पत्थर की लकीर है. एनडीए अब की बार 400 पार. समय अल्प है, लास्ट के 30 और 10-15 सेकंड एक्स्ट्रा, तो थोड़ा सा हम 5 शब्द आपको बताएंगे. रैपिड फायर है जैसा है कि व्हाटएवर कम्स टू हमें योर नहीं पता था एक दिन आनंद नरसिम्हन करण जौहर का पूरा स्वरूप धारण करेंगे. देखिए, ये एक नाता तो रहा है कहीं ना कहीं करण जौहर से. नहीं एंटरटेनमेंट से.
और करण जौहर अच्छे मित्र हैं, ऐसा नहीं है, पर मैं आपसे मित्र भी हैं। हाँ? अच्छा, तो you see your journalist friends, all their eyebrows are going up. Yes. तो हम वो तो आपके आपके सामने भी मित्र शब्द रखेंगे, आपके मन में जो पहला विचार आएगा वो आप एक या दो शब्दों में या एक लाइन में खत्म करेंगे। तो हम जी। शुरू करते हैं। हाँ, पहले आप। ओके। शक्ति। दुर्गा, देश। राहुल, नाम तो सुना होगा। ये तो आपको उनसे कहना चाहिए था, स्मृति हूँ। अगर आप वो शब्द कहें तो मर्यादा विहीन। मोदी। शक्ति के उपासक। 370। 400 पार। और आखिरी आखिरी स्मृति। माँ। Ladies and gentlemen, Smriti Irani ji. How बहुत lovely. A huge round of applause once again for Minister Smriti Irani at her oratorical best and also daring Rahul Gandhi. Thank you so much, ma'am. Really lovely. Thank you. Anand, Rubika, thank you so much as well. Well, she is known for a fine oratory. Smriti Irani there also daring Rahul Gandhi to contest from his old battleground of Amethi. Clearly, politics is heating ahead of the Loksabha polls. She also said that the Prime Minister is an emotion. He's someone who has given a national ambition to the people of the country. That was Smriti Irani speaking to my colleagues Anand and Rubina. We have another very, very interesting session coming up, more on geopolitics, foreign policy. I'd request everyone to be kindly seated, please. We're just about to begin our next session for the evening. So let's begin. Without further ado, ladies and gentlemen, it's a conversation that we're going to be having with a scholar, an expert, who is often described as one of the most influential realists of his generation. He has also been one of the most famous critics of American foreign policy since the end of the Cold War. His stand of thought, which is sometimes described as quote-unquote defensive realism, holds that the need for security and ultimately for survival makes states to be aggressive power maximizers. States do not cooperate except during temporary alliances, but constantly seek to diminish their competitors' power and to enhance their very own. He has also spread no punches in arguing just why Ukraine crisis is the West's fault and why the United States and its European allies actually share most of the responsibility for the ongoing crisis. Please welcome John Joseph Mearsheimer, political scientist, international relations scholar, and also the R. Wendell Harrison Distinguished Service Professor at the University of Chicago. He joins us in conversation with News 18's Palki Sharma for a session titled Geocalculus, Cracking the Code. Let's have a huge round of applause, ladies and gentlemen, for our esteemed guest. Thank you, Palki. Over to you. Thank you and good evening to all of you. We live in exciting but dangerous times geopolitically. There are two wars and many internal conflicts that are going on across the world. There are new alliances being forged and old ones being dismantled. And in this context, we're exploring a very important and complex question. What is the driving force of decision-making today? Is it realism? Is it power? Is it morals? Or is it a mix of everything? Also, where does India stand in this mix? What role will India play in the looming conflicts of this century? We look forward to exploring all of this with you, Professor Mearsheimer. Welcome to Bharat Rising. My first question to you is, what would you call the current world order? How would you describe it? Would you say it's still unipolar with America in the lead? Would you say it's truly multipolar? How would you see this?
I believe that the world today is multipolar. Most of you in the audience came of age during the unipolar moment, which ran from roughly 1991, when the Soviet Union collapsed, up until about 2017. And the United States was, of course, the most powerful state on the planet by far during the unipolar moment. But by 2017, roughly 2017, Vladimir Putin had rescued Russia from the dead, and Russia was back as a great power. And China, because of all of the economic growth that had taken place during the 1990s and the first 17 years of the 21st century, was also a great power. So we're now in a system where there are three great powers: the United States, China, and Russia. What about India? Where do you see India standing in this? And do you see India then as a bridging power, trying to bridge different ideological camps? Or is India just tilting things in the direction that's suited? Well, I would say, first of all, India is an aspiring great power. The two building blocks of power in the international system are population size and wealth. You need a great deal of wealth, and you need a lot of people to qualify as a great power. The reason that China was not considered a great power until recently was because it didn't have the wealth. It certainly had the population size. What China now has is population size plus wealth. What India has for sure is population size, and it's growing wealthier and wealthier by the year. But I think, according to most accounts, it has not yet reached the point where it qualifies as a great power. Nevertheless, there is no question that India is a major power, and it is, in a very important way, caught in between those three great powers, because India has all sorts of potential problems with China, mainly revolving around the border between those two countries. India has very close relations with both Russia and the United States, and from the American point of view, that causes problems because the Americans don't want India to have good relations with Russia. But of course, from India's point of view, it makes good sense to have good relations with Russia. So relations between India and the United States have been somewhat testy. They've been very good in terms of relations with Russia. And the question of China is, I think, a looming problem for India. But nevertheless, the world that India operates in now is very complicated, and India is going to have a complicated task moving forward dealing with this world. Is another way of looking at it this, that India is best poised to make the most of this complicated situation, because India can talk to and do business with all camps? I think at some point India will have to make some hard choices. I think the most interesting question is what happens between India, China, and the United States. My sense is that China will continue to grow more powerful, that it will build a potent blue water navy, and it will try to project power into the Persian Gulf, and it will therefore move through the Indian Ocean. And this will not make the Indians happy and will push the Americans and the Indians closer together. In the event of a conflict between India and China, do you think Russia will be forced to take a side? I think if there were a conflict between India and China, the Russians would do everything they could to sit on the fence and to not get committed. The Russians have no interest in having bad relations with either China or India. So if there was, and hopefully there will not be, a conflict between India and China, I think the Russians would do everything they could to stay far away. You've said in the past that great powers will always seek hegemony or dominance over others. You say that India is an aspiring great power. When it does become a great power, do you think I would do the same? Because I've seen any or any of the rhetoric that comes with
with these hegemonic tendencies? My basic view of international politics is that the ideal situation is to be a hegemon in your region of the world and to make sure that there's no other hegemon on the planet. And I basically argue that the United States is the only regional hegemon in the world. It's a hegemon in the Western Hemisphere. And the United States goes to great lengths to make sure that no other country dominates its region the way we dominate the Western Hemisphere. And that's why in the 20th century, we played a key role in putting Imperial Germany, Imperial Japan, Nazi Germany, and the Soviet Union on the scrap heap of history. The United States does not tolerate peer competitors. At the same time, I believe it makes eminently good sense for China to dominate Asia. I think that as China grows more powerful economically, it will try to dominate Asia. And I think from China's point of view, that makes good sense. From America's point of view, it does not make good sense. And certainly from India's point of view, it does not make good sense for China to dominate Asia. Just one final point. I would argue that if India were to grow more powerful than China, and the Chinese economy were to falter, and India's economy was to take off, and India looked like it could dominate Asia, it would try to dominate Asia. Not because of Indian culture or Indian politics, because that's just the way great power politics work. The best way to survive in the international system is to be really powerful. Interesting. Let's talk about the Ukraine war now. And you've accused the West of poking the Russian bear. It's been 2 years. It's a frozen conflict. No side is making much headway. And Putin has won a record 5th term in power. How do you see this war ending? And what do you think the West should do? Should they stop military aid to Ukraine? I believe that it's actually not a frozen conflict. I believe that the Russians are winning the war and that the Russians will end up with an ugly victory. I believe the Russians now control about 20% of Ukrainian territory. The balance of power has shifted decisively in Russia's favor in terms of both weaponry and manpower, which are of great importance in a war of attrition like the one you see taking place in Ukraine. And what I think is going to happen is that the Russians will end up conquering about 40% of Ukrainian territory. I think they now have annexed 4 oblasts plus the Crimea. My guess is, and I want to underline that this is just my guess, is that they will end up annexing 4 more oblasts, and they will end up with 40%, roughly 40% of Ukrainian territory. And what will be left is a dysfunctional rump state. Ukraine, in other words, will be a dysfunctional rump state that the Russians will go to great lengths over time to make sure is politically and economically weak so that it cannot become a part of NATO. But that, I think, is the likely outcome. That's the military end that you're talking about. What about the political end? Do you think Ukraine will end up joining the NATO? No, I think politically the Russians will go to great lengths to make sure Ukraine doesn't join NATO. And I think that the West will not bring a dysfunctional Ukraine into the alliance. So I think that it will not, Ukraine will not become part of NATO. Do you then think the West should stop the military aid to Ukraine? Because the American aid is tied in the Congress and the Europeans are still struggling to find the money to fund this war. Yes, this is a great question. I believe that it is best for Ukraine, and I want to underline that. I believe it is best for Ukraine to now end the war
to reach a settlement with the Russians. And that means two things. One, Ukraine must sever all of its security relations with the West, not just give up entering NATO. Ukraine should become a truly neutral state by severing its military or security ties with the West, because Russia's principal concern is the possibility of Ukraine joining NATO. That, the Russians say, to a person is an existential threat, and they do not accept that. So I think it's imperative that Ukraine become a neutral state. And then the other thing is, I think it's very important that the United States cut off all assistance to Ukraine, and that the Europeans collectively provide aid, economic aid, not military aid, to Ukraine moving forward until it gets on its feet. I'll come to the question of the aid in a bit, but you've said that Ukraine should become a neutral state, and you've argued in the past against NATO expansion to the east. The argument from the other side is that that's not a choice for Russia to make, which side Ukraine should go to. That's not something that Moscow gets to decide. Plus, recent polls have said that close to 70% Ukrainians want to be part of the NATO. So there is realism, and then there is public opinion. And in most quote-unquote democracies, leaders are swayed by public opinion. So if Ukrainians want to join the NATO, what should the leadership do? Well, the thing is that Ukraine, for obvious reasons,